नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक नए करियर ऑप्शन करियर इन काउंसलिंग के साथ आपके समक्ष हूँ और आज के इस परिचर्चा में भाग लेने वाली हैं एक यूथ एंड डायनेमिक काउंसलिंग प्रोफेशनल मिस देवोलीना डे। वेलकम देवोलीना। और आप बहुत ही यंग एंड डायनेमिक काउंसलर हैं। आपकी बहुत ही एक्टिव रोल कोविड के दौरान रहा। आपने यूथ, बच्चों और एडोलेसेंट्स को बहुत सारे हेल्प पहुंचाई कोविड के दौरान। तो क्या अपने व्यूअर्स को आप अपने काम और अपना इंट्रोडक्शन देंगे? Yes, ma'am. Thank you, first of all, ma'am. Namaskar, everyone. My name is Debolina, and I am a counseling psychologist. I have worked in the client interfacing role for 3.5 years. And the first 2 years, I worked as an engagement manager in a corporate uh, company. And the second 1.5 years, I worked in a school with children. Both the places I worked with children, adolescents, and their parents. And I have done my bachelor's in psychology with honors from Calcutta University, master's in psychological counseling from Bangalore University, and a diploma in special education from ACT, Asian College of Teachers. So, thank you, ma'am, for inviting me for this talk today. ग्रेट। आपका परिचय जानकर हमें और हमारे व्यूअर्स को भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बहुत सारे विजुअल लर्नर्स भी होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम इस परिचर्चा को पावर पॉइंट के हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स देवोलीना ये जानना चाहेंगे कि काउंसलर्स किसको कहते हैं। काउंसलर जो है वो क्या होते हैं और उनका काम क्या है? जी बिल्कुल। तो counselors or counseling is basically a field where we help others. और counselors जो होते हैं वो दूसरों की मदद करते हैं. They help the other people resolve their issues in different areas such as emotional, psychological, relationship, career, and so on. So if you look at the definition of counseling, or a counselor, who is a counselor? A counselor is basically a trained professional who would help people resolve their emotional, mental, psychological, career oriented, or relationship related problems. And also, there are different kinds of counselors, there are different fields in counseling. So, yes. क्या हम, आप या फिर कोई थर्ड पर्सन काउंसलर बन सकता है या फिर उनके लिए कोई विशेष स्किल की जरूरत होती है? Well, ma'am, if you ask me, then yes. काउंसलर बनने के लिए बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जिसकी बहुत जरूरत होती है, जैसे कि लिसनिंग स्किल्स या फिर एम्पथी and understanding skills. Empathy is basically where you put yourself in another person's shoes to see how would you feel, to understand what the person is feeling. Then keeping a non-judgmental attitude, keeping an open mind. You have to be patient and in a calm manner. You need to be able to understand other people's emotional issues and keep yourself in a calm place so that you are able to help that other person cope with the emotional and mental challenges that they are going through, difficult challenges that they are going through. You need to have or be able to adapt different kinds of communication, because एक कॉन्सेप्ट जो कि साइकोलॉजी या काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस. और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में we say that every person is different. So whenever you're dealing with any client, you need to mold your communication style. You need to be able to cater to that person's needs, ताकि आपके क्लाइंट को आपके साथ बात करके फायदा हो और वो लोग अपने हिसाब से ढूंढ पाए कि कौन सा सोल्यूशन उनके लिए बेहतर होगा. And
most importantly, building a rapport is very important, and trust. These are certain skills that is very important in counseling. तो यदि अगर कोई व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है और फिर एम्पैथेटिक है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो काउंसलर बनने के लायक है, वो अपने आप को इस फील्ड में ला सकता है, राइट? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सो रोजमर्रा की जिंदगी में हम तरह तरह के प्रॉब्लम से डील करते हैं। कभी इमोशनल डिस्ट्रेस होती है, कभी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो एक व्यक्ति क्या एक ही काउंसलर के पास जा सकता है, या फिर अलग-अलग प्रॉब्लम से डील करने के लिए अलग-अलग स्पेशलाइज्ड काउंसलर होते हैं? जी मैम, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। जैसे for every part of your body you go to different kinds of doctors, right? Similarly for psychology also, or for counseling also, there are different kinds of psychologists. जैसे कि कोई psychopathology या कोई severe disorder जैसे anxiety disorder, mood disorders, depression, bipolar disorder, अगर ऐसा कुछ हो तो हम लोग clinical psychologist के पास जाते हैं। या फिर अगर कोई इमोशनल इश्यूज हो तो फिर हम लोग इंडिविजुअल काउंसलर्स के पास जाते हैं। या फिर करियर रिलेटेड कोई इश्यूज हो तो करियर काउंसलर के पास जाते हैं। फिर रिलेशनशिप या फैमिली रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड कोई इश्यूज हो तो हम लोग जाते हैं मैरिज एंड फैमिली काउंसलर्स के पास। या फिर सब्सटेंस रिलेटेड इश्यूज, सब्सटेंस अब्यूज रिलेटेड होता है तो we go to substance abuse counseling. And if it's very I would say a severe kind of substance abuse that the person is not able to come out of, that's when we go to rehabilitation centers where there are rehabilitation counselors. And this yahan pe we have certain names of counseling specialties mentioned. However, there are many more which are there, like sports counseling, games counseling, and स्कूल काउंसलिंग इज अनदर थिंग। एजुकेशनल काउंसलिंग जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एजुकेशनल काउंसलिंग यूजुअली डील्स विद चिल्ड्रन इन स्कूल, adolescents in school, and also children with special needs. ओके, तो क्या सारे काउंसलर्स क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उन्हें कहीं रजिस्टर करना होता है? लाइसेंस की जरूरत होती है क्या? जी, usually clinical psychologists who want to practice in clinics or psychiatric wards या फिर hospitals में काम करना चाहते हैं, psychiatry wards में काम करना चाहते हैं, they would require an RCI registered or a license, like it's Rehabilitation Council of India, which is the only recognized council in India for counselors. ग्रेट। तो हमारे व्यूवर्स यह जरूर जानना चाहेंगे कि एक काउंसलर बनने के लिए कौन से कोर्सेज हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यस मैम। सो जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि आपको पता है स्कूल के टाइम से कि आपको साइकोलॉजी ही पढ़नी है, आपको काउंसलिंग ही करना है, तो फिर आप बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। बैचलर्स इन साइकोलॉजी कैन बी इन बोथ वेज, बोथ BA एंड BSc, एंड वन यू कैन डू इट विथ ऑनर्स, और दूसरा होता है जो कि ट्रिपल मेजर होता है कोई दूसरे और सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस इनके साथ, या फिर इकोनॉमिक्स के साथ आप कर सकते हैं। जैसे बैंगलोर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दे गिव सच अपॉर्चुनिटीज। And other than that, after doing a bachelor's, you can always go for B.Ed if you want to get into working with children with special needs. So फिर B.Ed कर सकते हैं आप special education में, and then M.Ed in special education. Or if you want to go directly to counseling or clinical psychology या फिर forensic psychology, आप उस पे masters भी कर सकते हैं। बहुत सारे colleges हैं
जो ऑफर करते हैं मास्टर्स इन डिफरेंट एरियाज सच एज काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRDM जो हम बोलते हैं। या फिर आप अगर किसी दूसरे फील्ड से हैं तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं काउंसलिंग में। उसके बाद ट्रेनिंग होती है डिप्लोमा में। डिप्लोमा कोर्सेज यूजुअली आर फॉर 8 months to 1 year। बैचलर्स डिग्री जो भी है except for B.Ed, all the bachelor's degrees are for 3 years, even with honors. Master's degrees are usually for 2 years, and certificate courses last from 6 months to 1 year, and diploma courses last from 8 to 16 months. तो ऐसे ड्यूरेशन रहते हैं। तो आप डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन काउंसलिंग में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद एक्चुअली इफ यू वांट टू प्रैक्टिस आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ काउंसलिंग, then you have to take a specialized training or internship. Internship is very important when you do diploma as well as a certificate program. Yes. So there are various paths through which Yes. anyone can become a counselor. So please explain about this to our viewers. Yes, मैम, डेफिनेटली। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के बाद अगर आपको पता है कि आपको साइकोलॉजी फील्ड में जाना है तो आप जैसे नॉर्मल साइकोलॉजी ले सकते हैं फॉर अ बैचलर्स डिग्री। It's not always that you have only psychology. There's psychology, counseling, clinical as well for bachelors. Then you can do a master's in counseling or the specified field that you like: counseling, clinical, mental health psychology. Health psychology is a very important part. Health psychology, या फिर there's social psychology, cultural psychology too. If you decide that you are not sure कि आपको psychology ही लेना है, आप किसी social science या related field में है, for that you can do a bachelor's. उसके बाद you can do a PG diploma or a graduate course, or you can do internship and then do a certificate course, or you can directly enter for master's. If you are doing a bachelor's in any subject for that matter, then you can first go through a diploma or a certificate or a B.Ed in special education, and then go for a diploma in mental health counseling या फिर career counseling, and also internship again is necessary here for getting an idea as to how things work. If you have a 4-year integrated course degree with a BA or B.Ed, BSc in any field, then also it's the same pathway. You have to do a diploma course, a PG diploma, or a certificate. PG certificate भी होता है, which you can do. That is usually considered as a conversion course or a bridge course. उसके बाद आप masters भी कर सकते हैं. Bachelor's degree in any subject that you have done, and you don't want to do a master's, then you can directly go for a certificate course, after that a training, or a diploma course and then a training. And this training needs to be rigorous under supervision. And for any course that you enter in a bachelor's level, you would need 55 and 55% and above in your 12th boards in order to get into that field. And usually throughout the course, 50% marks is very important in the subjects that you have scored. And internship is every time important. Yes, ma'am. Internship is very important in order to get a field knowledge, in order to get a hands-on practice, because psychology या फिर counseling is a very subjective subject. जैसे हम लोगों के साथ deal करते हैं, as I already mentioned, individual difference is very important. आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे जब आप बात करेंगे या फिर काउंसलिंग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। आपको तरह तरह के प्रॉब्लम्स दिखेंगे, आपको तरह तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, इफ आई गेट अ क्लाइंट लाइक दिस, देन आई कैन मोल्ड माय सेशंस इन दिस वे. So
to get an idea for that, clinical placement or a training is very important, and supervised हो तो nothing like it. बहुत बढ़िया। तो क्या कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ एडमिशन टेस्ट की जरूरत होती है या फिर मेरिट पे होता है? मैम टू बी ऑनेस्ट, किसी किसी कॉलेजेस में दे डू हैव एंट्रेंस. फॉर एग्जांपल क्राइस्ट कॉलेज, BHU, all of these colleges they have their own entrance. Nationalized entrance कुछ वैसा नहीं है psychology या counseling के लिए. If they apply for a college, and in the college website only they'll get to know whether they will have to take an entrance or not. So, or for every college it's not mandatory also. So admission procedure is varies from college to college. Yes, definitely. So can you please advise some of the top colleges that offer UG and PG courses? Yes, ma'am, definitely. So if you look at Delhi, there's Delhi University, Jamia Millia Islamia University. There's Christ University in Bangalore, Ambedkar University in Delhi, Ashok University in Sonipat, Punjab University, then BHU, as I've already mentioned, BHU, Aligarh Muslim University. BHU is one of the top and most rather oldest universities in India offering a psychology degree, both in bachelor's and master's and doctorate for that matter. Ferguson College is again a very good college. Tata Institute of Social Sciences, Mumbai is a very good college. Indian Institute of Psychology and Research is again a very good college for UG and PG. So I have studied from Indian Institute of Psychology and Research, and I can say that all the universities that are mentioned here have really good courses in psychology. Some of the institutes offer some PG and yes, PG diploma courses. Yes, ma'am. So some of the colleges or universities are there who offer RCI registered courses as well. And they offer PG diploma courses in guidance counseling. They offer PG diploma in special education also. There's Delhi University, Jamia Millia Islamia actually is famous for their guidance counseling certificate and PG diploma course. Then NCRT Delhi offers guidance counseling, and both Jamia Millia and NCRT are RCI registered. Then there's Maharshi Dayanand University, SGT University. There's Amit University also who offer diploma courses. And there are some universities, if you look, then they offer for distance learning courses also. Okay, good. So हमारे व्यूअर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर हम काउंसलर बनते हैं तो हमारे लिए क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? जी, well, as I said, skills के हिसाब से the first and foremost important thing is that you need to build a rapport, a relationship, a trust between you and your client. Confidentiality बहुत important होता है. अभी जैसे कोविड के टाइम के वजह से हम लोग काउंसलिंग ऑनलाइन या फेस टू फेस counseling nahi ho raha. Maximum counseling is happening online, on a video call or over the phone. It is very important to have a calm voice. It is very important to be able to reassure the clients that they are in good hands, they are in a safe space to talk about things. It also includes maintaining a record, keeping a record of your clients, the challenges your clients are facing. You will get to work with different kinds of clients. As I said, individual aapko milenge, adolescents milenge, children milenge,
you will be able to work with families, and also one part is group counseling. Sometimes what happens is, if we see in places there are some people, especially in schools, किस बहुत सारे बच्चों का सेम इश्यूज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, we put them in one group and we go for group counseling. उससे क्या होता है, they develop a sense of responsibility, they develop a sense of relationship building, team building, more like a team building activity, and develop trust. And also paying attention, keeping an open posture, listening to what your client is saying, helping them see their problems not just as a problem but from a third person's perspective. The main role of a counselor is to help the clients see their problem from a third person's perspective, and then help the clients to identify the different kinds of things that they could do in order to help themselves deal with those problems. So these are the primary responsibilities that I would say there is for a counselor in every counseling field, for that matter. Yes. So counseling is a very responsible job. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. ओके, सो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि एक काउंसलर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पर है और टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल. So if you look at job opportunities or job areas, the government offers a lot of job prospects for psychologists and mental health professionals, especially health psychologists or health counselors. In hospitals, there are government hospitals who hire psychologists, clinical psychologists. There are private hospitals who hire clinical psychologists, health psychologists. You can get into defense service as well. You can also get into places like ISRO for psychological counseling. You can also work in a corporate health sector, or you can work in corporate sector altogether as a mental health trainer or mental health counselor, or you can work as organizational behavior counselor. Okay, and you can work in NGOs. There are social development agencies who offer life skills programs for different age groups. Then there's teaching. You can always get into teaching, as well as you can be hired in schools. Colleges also have started hiring. You can start your private practice as well. So these are many areas in which you can get a job, and the top recruiters that are there is NIMHANS, which is in Bangalore, then St. John's Hospital again in Bangalore, then TIS, Tata Institute of Social Sciences, which is in Mumbai, ISRO, as I've already mentioned, because they require psychological counselors in order to prepare their team for any important activities that are coming up. There's Mansi Therapy in Kolkata. Any CBSE and IB board schools have a mandatory opening for school counselors anywhere in the country. There's Mind Care in Kolkata, Mansa Psychological Center in Bangalore. Then there's Cadabum's Mind Talk, Your Dose, Insight Academy. There are plenty of psychological centers also who hire, but these are the primary ones that those which we can call as top recruiters for psychology or counselors. तो देवलीना, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे व्यूअर्स को करियर इन काउंसलिंग के विषय में बताया. तो हमारे व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप करियर इन काउंसलिंग के विषय में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं. 9109548885 पे कॉल करें, या फिर करियर काउंसलर इंडिया
career@gmail.com पे अपनी क्वेरीज को लिखें। और आप हमेशा हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। आप समय समय पे वहाँ पे डिफरेंट करियर स्कोप के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और भी करियर से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। तो हमारा आज का ये जो इंफॉर्मेशन था करियर इन काउंसलिंग से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे खत्म करेंगे। और माय डियर मिस देवोलीना, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे व्यूअर्स को करियर इन काउंसलिंग के विषय में बताया। आप आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपके कीमती वक्त के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। And on behalf of Career Counselors India, we wish you all the very best for your bright and successful career ahead. हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much. आप हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगी क्या? Yes, ma'am, I would like to add that being a counselor, yes, it is a responsible job, but at the same time, being a counselor gives you a lot of fulfillment. You are able to help someone resolve their issues, you are able to help someone take care of themselves, and being in the helping profession gives you a different level of satisfaction कि आप society के लिए आप कुछ कर रहे हैं. So that's the only thing that I would like to add, and all the best to whoever is watching this. I am sure Career Counselors India would help you further towards your goals. Thank you, ma'am, so much for inviting me. It was a lovely time to you, and as well as being able to help the prospective counselors start their journey. Thank you very much.